हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय भगवती, जय जगदम्ब, जय उमिया माता। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च भारतस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य हम चर्चा करते आ रहे हैं कि इसी प्रकार ज्ञान परक श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। और आगे सबसे पहले ये चर्चा की कि भक्ति का अन्य स्थलों में अध्याहार कर लेना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी में ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। तो भगवान ने उसे प्रायः भक्ति प्रधान कर्मयोग का उपदेश दिया था, उसकी चर्चा की। अब हम गीता जी में जिस प्रकार से भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, इसकी चर्चा, कर्मों का रहस्य भी जो भक्ति मालिक खोला गया है, इसका रहस्य दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक तक हमने इसका चर्चा किया। तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से 35वें श्लोक तक। तो कल हमने तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक तक चर्चा की थी। अब आगे जाते हैं। यस्त्वात्मरथ देवत यस्मात्मतरति देवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्त्वात्मरति देवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, क्षमा करना, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसमें भगवान कर्मों के रहस्य खोल रहे हैं। बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, stated, for him there is no duty. अब आगे कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। A self-realization man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has be any reason not to be performed such work, nor has he any need to depend on any other living being. तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। इसलिए निरंतर कार्य करते रहो। असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act in a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. आगे कहते हैं, बड़े बड़े लोगों ने भी कर्म नहीं छोड़ा है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। Kings such as Janakas attained purification slowly by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of the educating the people in general, you should perform your work. माने हमें हमारा काम करना ही चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common new follow, and whatever standards he sets, the exemplary acts all the wood pursuers. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। O son of the Partha, there is no work prescribed for me within all the 3 planetary systems, nor I am in a want anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties.
यदि ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. For if I have failed to engage in carefully performing prescribed duties of Parthas, certainly all men would follow me Partha. Utsideyurume loka न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मः प्रजा. If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put the renunciations. I would be the cause of the creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. माने भगवान कह रहे हैं कि कर्म से ही प्रसन्नता होती है. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तश्च कीर्षुर्लोक संग्रहम्. As the ignorant perform their duties with achievement results, the learned may be similarly act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. न बुद्धि भेदम जनये अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरत. माने समझकर कर्म करते रहो. सो ऐसे नॉट डू डिस्ट्रिप्ट द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work. Rather by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते. हम करता नहीं है, हमें करता नहीं मानना चाहिए, भगवान करता है. The spirit soul, believed by the influence of false ego, thinks himself the doers of activities that are in actually created out by the three modes of the material nature. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. One who is the knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotional and work for fruitive result. प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ः संगन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत. कहते हैं, बिलीवर्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, द इग्नोरेंट फुली एंगेज themselves is material activities and become attached, but the wise wish should not unsettle them. Although these duties are inferior due to the perform's lack of knowledge. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. Therefore, Arjuna, surrendering all of your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims of proprietorship, and free from lethargy fight. ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy, he come free from bondage of fruitive actions. ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः. But those who out of envy discard these teaching and do not follow them
regularly are he considered bereft of all knowledge, befolded and renewed in their endeavors of perfections. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can represents accomplish? Indriyasyendrasyaarthe ragadveshau vyavastitau tayornavasamagatchet tau yasya paribandhinu. There are principles to regulate attachment and our aversions pertaining to the senses and their objects, and should not become under the control of such attachment and aversions, because they are stumbling block on the path of self realization. और इसी चर्चा का अंतिम श्लोक है तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से 35वें श्लोक तक कर्म का रहस्य बताया. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. It is far better of discharge one's prescribed duties, even thou faithfully, than another's duties, perfectly distractions in the cause of performing one's own duties better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. तो दूसरे के धर्म पर चलना बहुत कठिन है, नहीं जाना चाहिए. बहुत अच्छी चर्चा भगवान ने हमें कही. ये भी हम नहीं कह सकते कि ये चर्चा बहुत अच्छी है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो भगवान जो कहे हैं, भगवान जो कर रहे हैं, सब बढ़िया ही होता है. आइए अब थोड़ा भगवान का हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे. आज थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा कि हम जल्दी थोड़ा किए, क्योंकि 15 श्लोक थे एक सी कर्म के बारे में, हमें आधे ही लेना चाहिए था, लेकिन भगवान की इच्छा यही होगी. तो हम गलती कर चुके हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं. फिर कभी ऐसा जल्दी नहीं करेंगे. हम सोच रहे थे कि एक विषय एक ही साथ यदि रखा जाए तो सबके लिए ठीक है, इसलिए हमने ये शुरुआत की. आइए अब नरसिंह मेहता का कृष्ण का जो भजन है वो हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु हमारी हुंडी पे आप स्वीकारना, है ना. हुंडी माने हम जो कहें कि प्रभु हमें ये दो, ये आप स्वीकार के हमारा मंगल करना. ये क्या शब्द हैं, इन शब्दों को सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे हम. करी बड़ी बाई मीरा ने काज झेर ना प्याला मोकल्या रे हे वालो झेर ना
ચારણહાર શામળા ગીરધારી વાલો ઝેરના ચારણહાર રે શામળા ગીરધારી મને એક તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી મને એક તમારો આધાર રે શામળા હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી ગોવિંદા 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 હે સ્તંભ થકી પ્રભુ પ્રગટ્યા રે અને વળી ધર્યું નરસિંહ રૂપ પ્રહલાદને ઉગાર્યો રે વાલે માર્યો રે વાલે માર્યો રે હરણા કંઠ રે ગીરધારી વાલે માર્યો હરણા કંઠ ભૂપ રે શામળા ગીરધારી હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગીરધારી હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી स्वीकारो महाराज शामळा गिरधारी। हे गिरधारी, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम। हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय जगदम्ब, जय भगवती, जय उमिया माता, जय हो प्रभु, जय हो।